Champs, welcome back again to our online learning platform. In this video, we'll be starting with a poem named The Schoolboy, written by a very famous poet William Blake. If you want to read interesting and deep meaning, very interesting poem, you can easily Google it, Poems of William Blake. Now, the title itself tells us that the poem is about a school boy. Let's see what is in the poem. Before we read, let's start with these lines here. The school boy is the poem is not a happy child. What makes him unhappy? Why does he compare himself to a bird that lives in a cage or a plant that withers when it should blossom? So this poem, we already know this poem is about a schoolboy. First of all, the boy who is not a happy child. So we will be seeing why he is so unhappy and why do he compare himself with the birds and with the plants. माइट भी वो किसी और चीज़ से भी अपने आप को कंपेयर कर सकता था, बट इस पोएम में अपन को पता चलेगा कि वाई ही इज़ अनहैप्पी, कि वो सैड क्यों है एंड वो क्यों कंपेयर करता है अपने आप को बर्ड से एंड प्लांट से. एंड एट द एंड इट इज़ रिटन दैट द बर्ड इन द केज यू कैन मार्क डाउन, ठीक है, एंड एट द एंड लिखा है प्लांट्स दैट withers means when the plant becomes dry, when the plants shed their leaves, or you can say when the plants get faded away, so that जो ड्यूरेशन होता है उस प्लांट का उसको कहते हैं नाउ द प्लांट इज विदरिंग. तो वो कह रहे हैं कि ऐसे प्लांट से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि जो विदर हो रहा है किस समय, जब उस समय उसको ब्लॉसम होना चाहिए, जब खिलना चाहिए था उस प्लांट को, वो उस समय विदर्ड हो रहा है. तो उस विदर्ड प्लांट से अपने आप को वो कंपेयर कर रहा है. नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टैंजा. आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न व्हेन द बर्ड सिंग्स ऑन एवरी ट्री, द डिस्टेंस हंट्समैन winds his horn and the skylark sings with me. Now what he says, so in this poem the speaker is a boy, a school boy who is sad. It is written, जब अपन कहेंगे कि poem written by, तब different चीज़ होगी, और जब मैं कहूँगी speaker means जो अपनी बात आगे रख रहा है इस poem में, that is called speaker. तो यहाँ पे speaker कौन है? The sad school boy. So that boy is telling us that that boy likes to rise, means awake in the fresh summer morning. He likes to get up in the fresh early morning when the birds chirps on every tree. Sings भी आ सकता है, you can write chirp. That the boy is describing the beauty of the अर्ली समर मॉर्निंग. आपने कभी नोटिस करी है कि अर्ली मॉर्निंग एकदम कितनी कोल्ड ब्रीज होती है, everything is so quiet, it is so beautiful. Similarly, that boy is telling the beauty of the summer morning in which the birds are chirping on tree, and in that morning when it is quiet, he can hear, that schoolboy can hear the horn which blows the huntsman from the distant field. Distant means the field which is far away, okay, from where you can say the hunter from which the field is very far. He can hear the horn of that huntsman, and he says that the skylark sings with me. Skylark is a bird. Now he is describing that already it is so beautiful, and even the bird skylark is also singing with me. Last line, oh what a sweet company. So now boy is telling कि जितनी भी वो मॉर्निंग में जो वो फील कर रहा है, he is feeling so joyful with the his surrounding of summer morning. Next paragraph. But to go to school in the summer morn. Here it is written, I should mark for you,
Morn and morn. This means morning. दिस मीन्स मॉर्निंग. आप अपनी बुक के साइड में लिख सकते हो. मॉर्न मीन्स मॉर्निंग. एंड वाई इट इज़ रिटन मॉर्न हेयर? टू मेक अ राइमिंग स्कीम, टू मेक द पोएम राइमिंग. जैसे मॉर्न एंड हॉर्न, तो ये राइम हो सके इसलिए. इसमें कोई लॉजिक नहीं हो सकता कि वाई पोएट ने मॉर्निंग क्यों नहीं लिखा. ओके, टू मेक इट इंटरेस्टिंग, टू मेक द पोएम राइमिंग, दैट इज़ वाई पोएट यूज these such kinds of words. Now again we'll start with the second paragraph. But to go to school in the summer morn, oh, it drives all the joy away. Under a cruel eye, count one, the little ones spend all the day in the sighing and dismay. Now he is telling he doesn't want to go to school in the summer morning because for him the summer morning is so beautiful. He don't like, that boy don't like to go to school in summer morning. Just like रेगुलर स्टूडेंट्स, राइट. किसी को भी ज़्यादातर को नहीं पसंद आता कि सुबह सुबह स्कूल जाना. सो हेयर वी सी द बॉय इज़ अनहैप्पी बिकॉज ही डोंट वांट टू गो स्कूल इन समर मॉर्निंग. सेकेंड लाइन कैसे बता रही है कि ओ इट ड्राइव्स ऑल द जॉय अवे. मीन्स जितनी भी जो जॉयफुल फीलिंग थी, ड्राइव्स ऑल अवे मीन्स वो सारी चली जाती है. जॉयफुल फीलिंग, द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस सारी चली जाती है जब मॉर्निंग में स्कूल जाना होता है. अंडर अ क्रूअल आई आउटवर्न द लिटिल वन स्पेंड्स ऑल द डे इन द साइंग एंड डिसमे. सो अंडर अ क्रूअल आई outworn means, cruel eye outworn is the phrase which refers to the you can say the dull uninspiring life at school with lots of work and no play. So boy is saying कि I spend all the day in sighing and dismay. Sighing means here, sighing means you can write down sad. Dismay means boring. Okay, now that boy is telling us that all the day I am so sad and I am so bored because I am under a cruel eye out one, because I am living the life of this boring and dull school under the teachers, or you can say under a strict teacher. तो वो पूरे जो स्कूल का जो पूरा दिन है, वो पूरे दिन में से वो बॉय को एक भी ऐसा पार्ट नहीं फील हो रहा कि येस ही इज़ enjoying. Third paragraph. Then at the times I drooping sit and spend many and anxious hours. Again in the same paragraph, the child expresses his tiredness. He is unwillingly in the school in the boredom. Now drooping means not interesting. Here drooping means uninteresting, or you can say again boring. Anxious mean uneasy या worry. Now again that boy, that school boy is explaining to us that I spend many hours in worry, very uneasy, because he is very might be scared of teachers, because there might be, मतलब यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे वो एक जो आंसर्स बता रहा है कि वाई ही इज़ नॉट लाइकिंग द स्कूल, यहाँ पे फिक्स नहीं है. यहाँ पे सिर्फ अजम्पशंस अपन लगा सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं कि उसको ये स्कूल क्यों नहीं पसंद हो सकता. तो फर्स्ट ऑफ रीज़न बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट टीचर्स. एंड ड्रूपिंग सिट्स मीन he is very uninterested in the classes, in the lesson time. Next line from here. Nor in my books can I take delight, nor sit in learning bowers worn through with the dairy showers. Now he says I cannot find delight, means joy, happiness, or you can say excited. I cannot find that joy in my books, and I cannot refers to learning in the bower. Here he said I cannot also find the delight in learning bowers. Learning bowers is refers to a garden
learning bower refers to a garden where child can taught in interesting way. सो अगेन उस स्कूल में अपन को क्या पता चल रहा था कि एक लर्निंग बोवर भी था, बट स्टिल मीन्स एक ऐसी प्लेस जहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है इन इंटरेस्टिंग वे. बट उस इवन गार्डन में भी जो बॉय है ही इज़ नॉट फाइंडिंग डिलाइट. लास्ट लाइन मीन्स worn through with the dairy shower means he is telling us that he is tired with the dull and boring showers of lecture. Dairy means boring, or you can say dull. So he is saying all my day is boring and I am tired of all the lectures and I cannot find my delight, my happiness, my joy which I see in the summer morning around myself, that is missing in the school. So in this video we will be taking 3 stanzas only. In the next poem we will see that what he thought to clear this boredom. What he say to his parents, that why he is feeling sad. We will be continuing this poem in the next video. Thank you so much for listening. Stay safe, stay well.